Welcome back to Mass Study friends. Friends, today we are going to practice two most important modals which are can and should. दोस्तों, आपको पता है कि हम can के sentences बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आज ये सारे स्टूडेंट्स can की प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताएंगे कि can और should के sentences कैसे बनाए जाते हैं और उनको कैसे बोला जा सकता है। दोस्तों, can का इस्तेमाल हम लोग तीन कंडीशंस में कर सकते हैं। एक तो जब हमें एबिलिटी बतानी हो, या फिर हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो, या फिर हमें कोई इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो। जबकि शुड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं दो बातों के लिए, जैसे कि हमें किसी को एडवाइस देनी हो या फिर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी हो। जैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें समय पर खाना खाना चाहिए, तुम्हें रोज नहाना चाहिए। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मैं 100 रन बना सकता हूँ, मैं रात भर पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, और आज बरसात हो सकती है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने बताएंगे और आप इनको सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिकली, आई गारंटी कि आपको ऑटोमेटिकली इनके बारे में, इन दो मॉडल्स के बारे में बहुत नॉलेज हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं और आपको ध्यान से सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। Good evening friends. Good evening. How are you all? We are fine and you? I am also fine. My name is Kajal Solanki from Sanawar. Today's topic is can and should. Please ask me question. मैं उसे चाटा मार सकती हूँ। I can slap him. I cannot slap him. Can I slap him? Can I not slap him? Please ask me next question. मुझे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मुझे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। I should respect parents. I should not respect parents. Should I respect parents? Should I not respect parents? Thank you for listening me. Guys, my name is Drashti Patel. Ask me a question. मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। I can speak English. I can not speak English. Can I speak English? Can I not speak English? Next question. हमें स्कूल जाना चाहिए। हमें स्कूल जाना चाहिए। We should go to school. We should not go to school. Should we go to school? Should we not go to school? Thank you. Everyone, good evening. Good evening. How are you? We are fine and you? I am also fine. First of all, thank you sir for giving me this chance. Today I am going to tell you two modals. First modal can and second modal should. Please ask me question. मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। My sentence is मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। I can help her. I can not help her. Can I help her? Can I not help her? Second question. तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। My sentence is तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। You should get up early in the morning. You should not get up early in the morning. Should you get up early in the morning? Should you not get up early in the morning? Thank you for listening me. Good evening. Good evening. How are you? We are fine and you? I am also fine. Ask me question. मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन सकती हूँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन सकती हूँ। I can become पुलिस इंस्पेक्टर. I can not become पुलिस इंस्पेक्टर. Can I become पुलिस इंस्पेक्टर? Can I not become पुलिस इंस्पेक्टर? Next question. उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। He should speak English. He should not speak English. Should he speak English? Should he not speak English? Thank you. A very amazing evening to all. How are you? We are fine and you? I am also fine. I am Kiran Birla from Sanawat. Friends, I tell the amazing evening because today I am going to tell you about two modals. The name of two modals is can and should. First, ask me the question of can. वह अकेली जा सकती है। वह अकेली जा सकती है। She can go alone. She cannot go alone. Can she go alone? Can she not go alone? Next, please ask me the next question of should. हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। We should behave good. We should not behave good. Should we behave good? Should we not behave good? Thank you for listening me. Hi friends, good evening. Good evening. How are you? We are fine and you? I am also fine. Ask me question. मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। My question is that मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। I can play cricket. I cannot play cricket. Can I play cricket? Can I not play cricket? हमें मंदिर जाना चाहिए। हमें मंदिर जाना चाहिए। We should go to temple. We should not go to temple. Should we go to temple? Should we not go to temple? Thank you to listening me. Hi, good evening everyone. Good evening. How are you all? We are fine and you? I am also fine. My name is Yamini Pawar from Sanawat. Please ask me a question. मैं डांस कर सकती हूँ। My sentence is मैं डांस कर सकती हूँ।
I can dance, I cannot dance, can I dance, can I not dance? Please ask me your next question. हमें पढ़ाई करनी चाहिए. We should study, we should not study, should we not study? Thank you for listening me. Hello friends, good evening. Good evening. How are you? We are fine and you? I am also fine. Today's topic is can or should. Ask me question. मैं घर जा सकता हूँ. I can go home, I can not go home, can I go home, can I not go home? Next question. मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए. मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए. I should speak English, I should not speak English, should I speak English, should I not speak English? Thank you. Hi, good evening everyone. Good evening. My name is Sakshi Pawar. Please ask me question. मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ. I can speak English. I can not speak English. Can I speak English? Can I not speak English? Next question. मुझे घर जाना चाहिए. I should go to home. I should not go to home. Should I go to home? Should I not go to home? Thank you for listening me. Hi. Hi. Good evening, friends. Good evening. My name is Lali Thakur. Ask me question. मैं पानी पी सकती हूँ. मैं पानी पी सकती हूँ. I can drink water. I can not drink water. Can I drink water? Can I not drink water? तुम्हें रोज नहाना चाहिए. तुम्हें रोज नहाना चाहिए. You should take bath daily. You should not take bath daily. Should you take bath daily? Should you not take bath daily? Thank you.